You come from Uttarakhand, right? And you are trying for a job in UP. कोई ऐसे पर्सनालिटी का नाम बताओ जो यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह चीफ मिनिस्टर है. Do you think such kind of harsh laws should be made for the students? What is the issue with Joshimath? Like it's a natural disaster or a man-made disaster? There is a report in India that in urban areas, cases of divorce are increasing. What are the major reasons for that? Women now have more control over their own agency. They are financially independent, therefore. Sir, may I come in? Yes, come in. Good afternoon, sir. Take your seat. Akanksha Gupta. Yes, sir. Presently, what are you doing? So I'm preparing full-time for the civil services examination. Okay. So you have passed out in 2017. Yes, sir. BTech CSC. That's a good branch. Yes, sir. You didn't go for any job? Sir, I was placed, but I decided to go for this exam. So you didn't join? No, I tried for CDS, but then due to myopia, I wasn't medically fit. Then I pursued civil services. So where did you get your placement? In which company? Infosys, Wipro and Cognizant. Oh, all good companies. Then why? I think you should have joined. So I think I am better inclined towards civil services than towards computer science field. Okay. Don't you think that UP administration also requires administrators well equipped with that computer knowledge? So not only UP, every state nowadays in this digitization era requires administrators with computer science knowledge. My knowledge will somewhere help. I think somewhere down the line it will help in me becoming a better administrator. So can you tell me like how computer will help in administration? Do you have certain or do you remember any UP government program and policies which requires knowledge of computer? As of now, I don't remember, but I recently read of a policy that UP government is promoting digitization actively, and digital infrastructure is a part of capital infrastructure which UP government is spending upon. UP data center policy and creation of cyber city and IT cities is an example to it. As far as specific program is concerned, I am not able to recall. Do you recollect some of the very important program policies, government program policies which have been the part of budget this year? Some very important program and policies. Of UP? Naturally, of UP. Are you aware of some of the important program and policies for the development of women in UP? Yes, sir. But I am unable to recall that which connects with the digitization. Don't try to connect it digitization. Just highlight some of the very important policies for Mukhyamantri Kanya Sumangla Yojana, Rani Lakshmi Bhai Pension Scheme, the Shakti Scheme. It's a 3-phase implementation: Mission Shakti, Action Shakti, and Shakti Agenda. Action plan. The 3-phase implementation is helping women over here. Okay. And recent budget has also some very important policy relating to your creation of some women battalion. Do you recollect? Women police or something like that? Don't you remember? You have not gone through the budget. I have just skimmed through the budget, not gone in detail. Okay. And what is this glass painting? Sir, this is a hobby which I pursue in this. On a portion of a glass or a transparent plastic sheet, I take a drawing and then I imitate it and then fill colors, watercolors, special colors which stick on these glasses, and then print it and then frame it. Okay. Do you remember the name of some of the very, very important painters in India who are associated with this glass painting? Sir, I read, but I'm unable to recall right now. Have you heard the name of Raja Ravi Verma? Yes, sir. His painting Shakuntala is very famous. He belonged to which place? Kerala. Kerala.
Yes, sir. And do you remember any painter from Uttar Pradesh? Sir, I read it, but I don't know, but I'm unable to recall it right now. I think one Mughal emperor, he is very, very famous for painting. Do you have any idea about that? Akbar with his painters Baswant and Dasavan. Okay. And one Mughal emperor, it is generally said that if some painting is painted or that work is done by several painters, then that Mughal emperor can distinguish the different parts painted by different painters. Do you have any idea about this? No, sir. You don't have any idea about this. Okay, Akanksha. Akanksha, you come from Uttarakhand, right? And you are trying for a job in UP. Okay. Recently, Uttarakhand government has implemented a decision regarding women quota, and it says that only women of Uttarakhand are eligible for that. Yes, sir. UP also has women quota, but it is open to all. Yes, sir. Which do you think is a better policy and why? So I think UP's policy is a better policy. Okay, but don't you think it is unfair on your part to try here when your state government is actually not allowing the people of, say, Uttar Pradesh or other states Sir, to qualify I want to say compete? one thing over here, that this I am a student who is availing this 30% reservation over there as well. Just 2 days back, I competed for Uttarakhand PCS mains. So of course, it is wrong on my part to say that my state is doing wrong. But morality says that when I am getting a fair chance in Uttar Pradesh, then Uttar Pradesh women should also get the fair chance in Uttarakhand. Also, the manner in which the women from other states were taken out of the mains examination process just before a week, and they have prepared it for almost 8 months, was something which I disagree upon with my state government. So why, and this is, Uttarakhand is not an isolated case, like we see in many other states also, like they are going for this jobs for locals, even going for reservation in private sector. So overall, how do you see this trend? Sir, reservation in private sector. Yes, reservation in private sector. Sir, for locals. For locals. So to some extent, it can be beneficial, because then we don't see complaints like sons of the soil theory. To some extent, they are pacified with that a little amount of reservation. But then if we make it a policy with hefty amounts like 40, 45, 50% reservations, then this is not an equal opportunity for anyone. Of course, Okay. India is a country. What is the issue with Joshimath? Like, it's a natural disaster or a man-made disaster? So Joshimath disaster is a combination of both. Joshimath is placed on a very fragile zone 5 earthquakes zone, and it is placed over a landslide which happened 200 to 300 years ago. So it is not very stable land. Also, it can incorporate a maximum of 15,000 people. So if we have to choose between development and conservation of nature, on which side we should lean? So I think we should take a balanced approach, but depending upon the geography. As far as Uttarakhand is concerned and the state of Joshimath is concerned, then environment should be a major our policy take. But as far as places like 𝐾𝐻 river was interlinking was on similar lines, that there was some protests happening, then I think then it will be on developmental lines. Okay. You are also a computer engineer. Yes. So tell me, what is ChatGPT and what is GPT in this ChatGPT? So chat stands for chatting, and GPT is generative pre-trained transformer. So what exactly is it? So it is a AI developed tool by OpenAI Technologies, which attempts to give us results, our queries, in a form as if it is given by an individual, a human being, rather than a computer. For example, is there any test available by which we can check whether something that is presented to us is actually created by a human being or by a machine or computer? So I'm not aware of. Not aware. Recently, a bank has failed in US. What's the name of that bank? Silicon Valley Bank, sir. And what is the main reason for its failure?
So it was mainly funding, giving funds to startups, and due to global liquidity crunch, the startups owners they started debting out of that. Okay. Is there any bank. link whatsoever with the increase in interest rates by the US Federal Reserve? Yes, sir. How like what is the link? When US Fed Reserve increased their interest rate, people prefer to keep their money in the bank rather than investing in startups, which they think are dangerous. Therefore, when this discourages people to invest in startups, so startups don't get fund. Ultimately, they take funds from these banks, and that's why the banks collapsed. Okay. My final question to you. Now, UP government has this ambitious plan of becoming a $1 trillion economy, and India has an ambitious plan, what people perceive to be 5 trillion economy, right? So, who is being realistic? The Indian government is being realistic, then definitely UP government is not realistic, right? And if Indian government is very conservative, then maybe UP government is right in going for a $1 trillion economy. What is your view? I think, sir, Indian government is more realistic, and UP government is making an aspirational task. So that if we make a task of 1 trillion, at least we can achieve 60-70% of it, and that will benefit UP even more. Thank you. Basically, you are from Uttarakhand. Yes, sir. Okay. Uttarakhand government has introduced a law, anti-cheating law. Yes, sir. Tell us something about that. Sir, anti-cheating law was introduced due to the cheating, which the paper leak scam for the Uttarakhand PCS 2021 mains exam, in which the chief examiner was accused of giving the papers to leaking out the papers. So the government has introduced strict penalties, like a penalty for crores of rupees. I remember it is 10 crore rupees penalty and a lifetime imprisonment. And for students who are involved in this, there is a 3-year ban for first time if they are found, and then the ban extends to, I think, 5 years. I'm not sure. You're not sure about that. But do you think such kind of harsh laws should we make for the students to ban them from giving examination? Or it is better to increase the moral values in the students so that they will not go for the cheating? Sir, as far as increasing moral values are concerned, almost every state government is taking an ethics examination per se, including UPSC. So sometimes laws are needed to curb this cheating. Also in Uttarakhand, unfortunately, last 2 years there were many incidences of exams being leaked. Almost 90% exams were leaked. That's why the government took this decision. Okay. Do you think digital platforms increase the chances of cheating? Digital means? Digital. Sir, I think it depends. I don't think so, sir. You don't think so? No, sir. It increases transparency. For example, the JEE exams now, students get to know their centers 2 or 3 days back. So earlier it was said that students used to collaborate with some reputed teachers and they can get out the papers. So now the papers are also set-wise different for every shift. So this is possible only through digitization of exams. Otherwise, it would have been an administrative mayhem for. There is a report in India that in urban areas, cases of divorce are increasing. What are the major reasons for that? So first reason can be women now has more control over their own agency. They are financially independent, therefore they don't seem to be let go with an abusive relationship. Also, sociologically, if I have seen that there are more of a clash of egos between the male and the female partners, and in this era they try to be friends at good terms rather than a husband-wife with a perpetual bitterness between them. Do you think it is good for society? So divorces are in no ways good for society, but as far as the individual is concerned, if he or she is happy with divorce and is at mental peace especially, then it is good for him. Otherwise we see cases of depression, suicide, domestic violence. So
It is better. Okay, my last question is, what do you think? What is the role of women in crime against women? Sir, I think it is more than a role of men against the crime against women. I ask about the role of women. Sir, 80%. Women often, unfortunately, women are not able to get along better with their female counterparts. For example, if I say that incidence of eve teasing is there, then there is very little chance of a female. It's very unfortunate to get into the argument or to save the female from the victim from that situation. So in that scenario, I said that women are also very responsible for crimes against. Akanksha, what is known as Hindi belt? Sir, Uttar Pradesh, Bihar, MP, Rajasthan. So Uttarakhand, Haryana, and Delhi. Okay. So you are expected to join or be the part of UP Civil Services, and that is Hindi belt. And you are supposed to interact with the people in Hindi, not in English. So, are you comfortable with Hindi? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है. तो समाजशास्त्र आपने पढ़ा हुआ है, sociology? Yes, sir. Like I just told you समाजशास्त्र and okay, no problem. Just translate Sanskritization in Hindi. I'm sorry, sir. And Westernization? So I don't want to take a chance. Pashtimi is something, it could be the translation, but I don't want to. You are not comfortable with Hindi. Okay. लेकिन I am asking some questions from you. ठीक है, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ. Sanskritization is संस्कृतिकरण and Westernization that is पश्चिमीकरण. पश्चिमीकरण. किसने ये दो सिद्धांत दिए थे? M.N. Srinivas. M.N. श्रीनिवास ने दिए थे. नहीं, मुझे आकांक्षा किसी जनजाति का नाम आपको याद है? उत्तराखंड से? भूटिया. ठीक है. अब भूटिया में भी आप कहीं संस्कृतिकरण का उदाहरण देखते हैं? संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण दोनों का. आपको भूटिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं, जबकि वो तो बहुत ही वहाँ के फेमस ट्राइब हैं. हाँ, भूटिया. अच्छा, एक और भी जो आपसे लास्ट सवाल है. जब उत्तराखंड के बारे में हम सोचते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. डिजास्टर मैनेजमेंट का आप हिंदी जानते हैं? कोई बात नहीं है. डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में क्या जानते हैं आप, ये बताइए. सर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लेके आए हैं 2005 में. उसके अंदर में NDRF, SDRF कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. हमारे स्टेट में एक अलग से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स बना के रखा हुआ है, जिसके तहत, क्योंकि वहाँ पे कभी वो ऋषि गंगा वाला डिज़ास्टर आया था, अभी जोशीमठ हुआ, तो उसके अंदर में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी हुई है कि ऐसा आएगा कोई डिज़ास्टर तो इस हायरार्की के थ्रू ही जाना है, क्योंकि वहाँ पे डिज़ास्टर्स बहुत फ्रीक्वेंट है. और एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर है वहाँ पे देहरादून में, और वहाँ पे मोस्ट पावर्स जो डिज़ास्टर के अंडर में है वो चीफ सेक्रेटरी को है वहाँ पे, और एक कमेटी है जिसके अंदर लैंड जो मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, चीफ मिनिस्टर तो हैं ही, और साथ में अर्बन और पंचायती राज मिनिस्टर जो वहाँ के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वो इंक्लूडेड. अच्छा आकांक्षा, ये बता दो जो अभी हाल फिलहाल में 5 ऐसे घटनाओं के बारे में बताओ जहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट देखने को मिला है. उत्तराखंड में. यस सर, एक तो ऋषि गंगा पावर प्लांट जो कोलैप्स हुआ था जब नंदा देवी ग्लेशियर टूटा था. एक जोशीमठ केस में अभी. एक सर केदारनाथ 2013 में वहाँ पे जब चौराबाड़ी ग्लेशियर फट गया था, ग्लेशियर लेक ओवरफ्लो की वजह से वहाँ पे. आकांक्षा, ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ऑब्जेक्टिव टाइप ही है. कोई ऐसे पर्सनालिटी का नाम बताओ जो यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह चीफ मिनिस्टर रहे. सर, गोविंद वल्लभ पंत, ND तिवारी. चलो ठीक है आकांक्षा, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है. यू कैन गो नाउ. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बैठिए.
Yes. तो आकांक्षा, व्हाट अबाउट योर इंटरव्यू? सर ठीक ठीक ही था, अच्छा तो नहीं था। अच्छा नहीं था, व्हाई? तो और बेटर हो सकता था, मुझे ऐसा लग रहा है। आकांक्षा, यू आर ए प्रॉमिसिंग कैंडिडेट, ठीक है, और यू आर ऑल्सो फुल ऑफ क्रिएटिविटी, उस तरह का इनोवेशन, उस तरह की चीज़ें आपके मतलब, और यू आर ए वेरी थॉटफुल पर्सन। बहुत बार ऐसा भी हुआ है जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो यू ट्राई टू थिंक एंड अप्लाई योर माइंड एंड देन यू आंसर। ये सब चीज़ें तो पर्सनालिटी की कुछ चीज़ें हैं जो आप में मतलब अच्छा खासा था, गुड पॉजिटिव साइड ऑफ योर पर्सनालिटी। लेकिन एक कुछ जगह चीज़ें जो ऐसी थी ना जो विच शुड बी अवॉइडेड। अगर आप चाहते हो आप अच्छा करो इंटरव्यू में, तो एक दिमाग में हमेशा रख लो, दिस इज टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, you have to be very serious in this, that means sincere, ठीक, not casual at any stage. This is formal occasion, never try to be informal. ये थोड़ा सा एक ध्यान रखो आप। दूसरा, मैं शुरू से ही स्टार्ट करता हूँ, when you came inside you just greeted me and then you sat down. सर मैंने भूल गई। हाँ, तो वो भूल गई, वही चीज़ है ना जो आप जैसे अभी हंस रहे हो ना, ये आपके पर्सनालिटी का ये ट्रेट है जिसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये चीज़ें भूली नहीं जाती हैं। yes. ठीक है, ये तो आपका बेसिक ट्रेट है आपके पर्सनालिटी का। जो सामने इंटरव्यू बोर्ड है, आपने वहाँ से परमिशन मांगा, देन यू केम इनसाइड एंड ग्रीटेड द चेयरमैन, अदर मेंबर्स। वो हाँ, उसको एक ही साथ ग्रीट करना है। हो सकता है यू जस्ट ग्रीट चेयरमैन एंड देन look at both the members, that means your greeting is complete. ठीक है, वो एक ध्यान रखना। and never laugh, ठीक है सर। हाँ, that will ruin your chances, ये हमेशा याद रखना। अच्छा, दूसरी बात, एक ड्रेस तो आपका साड़ी रहेगा? नहीं सर, मैंने सर लास्ट ईयर भी दिया था तो मैंने ऐसे ही दिया। तो जैसे आपने पाँव पे पाँव चढ़ाया, सॉरी सर, दिस इज नॉट योर ड्राइंग रूम, ठीक है ना, वो ध्यान रखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बी सीरियस। तीसरा, वैसे मैं तो कहूँगा साड़ी पहनने के लिए, लेकिन अगर आप जहाँ भी कंफर्टेबल हो। तीसरा, नेवर कीप योर हैंड लाइक दिस, दिस इज़ क्वाइट इनफॉर्मल। दोनों हाथ को आप सामने रखो, दैट विल बी बेटर। इसके अलावा आप देखो, यू हैव डन दैट इज़ बीटेक CSE। जब आपसे पूछा गया, आप विप्रो, आपने नाम सब बताए, ठीक, कॉग्निजेंट और सबका, इन्फोसिस का भी नाम बताया, और कहा गया भाई आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया, आपने कहा जो नहीं, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर। गलत जवाब था। तो इसका अर्थ है यू हैव वेस्टेड योर टाइम, यू हैव वेस्टेड योर एनर्जी एंड यू हैव ऑल्सो वेस्टेड मनी, एवरीथिंग, ठीक है ना। तो CSE के कारण ना यू आर वेल इक्विप्ड, ठीक है, आपने वहाँ ज्वाइन नहीं किया क्योंकि यू आर कमिटेड टू सिविल सर्विसेज, उसके प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उसके बाद इतने सारे क्वेश्चंस आ गए आपके पास, जो कंप्यूटर का क्या एप्लीकेशन है, क्या हो सकता है वो सब चीज़ें नहीं आती, ठीक है। तो दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो ऑलवेज ट्राई टू वैल्यू व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड हाउ यू हैव बीन एडुकेटेड, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा अगर हम आगे देखें चीज़ों को लेकर के, तो हर जगह आपका जैसे एक मेंबर कुछ ही वाज आस्किंग सम क्वेश्चन उसमें, एंड इन बिटवीन यू इंटरप्टेड। एक जगह आया था ऐसा मौका, वो ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो उसको आप बी ए पेशेंट लिसनर, पहले लेट द क्वेश्चन कंप्लीट एंड देन यू ट्राई टू आंसर, ओके, वो भी करो। इसके अलावा देखो, जो भी जैसे रिजर्वेशन के बारे में कहा गया, तो यू बिकम क्वाइट गिवर काइंड ऑफ थिंग, ठीक ना। ठीक है, हमें यहाँ पे रिजर्वेशन मिल रहा है यूपी में, तो नेचुरल है उत्तराखंड में भी गर्ल्स दे शुड गेट इट। देखो ऐसा है, ठीक है, दैट इज़ योर व्यू एंड दैट्स गुड, इवन वी माइट अप्रिशिएट इट, लेकिन देन यू विल हैव ऑल्सो टू हाईलाइट अनदर थिंग, दैट इज़ दीज आर गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज है, तो यूपी गवर्नमेंट ने अगर रिजर्वेशन दिया है, इट्स देयर पॉलिसी बेस्ड ऑन सर्टेन कंसिडरेशंस, एंड सो इज़ द केस विथ उत्तराखंड। वहाँ पे अगर किया गया है तो उसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो उत्तराखंड है, नेचुरली इट्स अ वेरी फेमस
फॉर सो मेनी इंसिडेंट्स। सो इस तरह की चीज़ें जो होती है, मिसहैप्स होते हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट को तो बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सोशियोलॉजी लिया हुआ है हिंदी में, ठीक है, आपने जवाब नहीं दिया, यू आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट, बट डोंट बी अम्यूज्ड। जैसे तुम्हें समाजशास्त्र, जैसे ही मैंने कहा समाजशास्त्र, यू जस्ट लाफ्ड, यू बिकेम अम्यूज्ड। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, इट्स अ फॉर्मल ओकेजन, बहुत सीरियस ओकेजन है, यू आर ऑलमोस्ट एट द थ्रेशोल्ड ऑफ योर सक्सेस, ठीक। तो वहाँ पे समाजशास्त्र आपने सुना, तो उसके बाद ठीक है, संस्कृतिकरण बाई चांस आपने नहीं उसको ट्रांसलेट किया, पश्चिमीकरण में यू ट्राइड योर बेस्ट। लेकिन एक चीज़ तो देखो, पॉजिटिव पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी दैट यू रिप्लाइड इन हिंदी। कुछ टर्म्स आपने ऐसे नहीं किए, लेकिन बहुत सारा चीज़ तो आपने हिंदी में बोला, सामने वाले तो वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो उस चीज़ को भी जो आप नहीं समझ सकते, सामने वाला बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है आपके पर्सनैलिटी का। तो इसलिए ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वंस यू आर स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, देखो सोशियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्राइब्स, ठीक है। और ट्राइब्स का आप एग्जाम्पल अगर नहीं दे, भूतियाज यू हैव मेंशन, भूतियाज पर आप नहीं जान रहे हो, उसके आगे कुछ भी, तो भूतियाज के बारे में तो जानना चाहिए ना। उसके अलावा और भी ट्राइब्स हैं, आपको उनके बारे में भी जानना चाहिए, बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी। तो थोड़ा सा वो सब चीज़ें देख लो। और एक लास्ट में जो मैंने जाते जाते एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिया, यू रिप्लाइड करेक्टली, ठीक है, चाहे वो पंत जी हो या तिवारी जी, तुमने जवाब इस तरह से दिया जो पंत तिवारी, एनडी तिवारी, थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ। सर मैं आपको याद, मतलब वो अभी है नहीं, तो मैं एक लेट बोलना था या क्या कुछ भी बोलना आप था, तो जो वो मैं भी, लेकिन कंफ्यूज थी। आप जी बोल देते, जी हाँ, ठीक है, एनडी तिवारी जी, ठीक है, ठीक है, पंत जी, आप ये बोल दे, गोविंद वल्लभ पंत वो जी, उसमें मुझे थोड़ा सा ये होना, अदरवाइज लगता है एनडी तिवारी गोविंद वल्लभ पंत, वो अच्छा नहीं जाता है कभी भी, ठीक है ना। क्योंकि आप जस्ट एक एल्डरली के बारे में बात नहीं कर रहे हो, वेरी वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन्स, हिस्टोरिकल पर्सन्स, तो हम उनको एक तरह से ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं अगर उनका नाम ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ग्लास पेंटिंग के बारे में भी आपने बताया, उसको अच्छे से पेंटिंग के बाद, जब दैट इज़ योर हॉबी, थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। जाइए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।